अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ आप लोग को आ रही है? Yes, sir. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। रिप्रेजेंटिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। जी, तो स्क्रीन आप लोग के साथ जो है शेयर हो रही है। जी, स्क्रीन आप लोग के साथ शेयर हो रही है। Yes, sir. ओके, जी, तो आप लोग को आवाज़ आ रही है? Yes, sir. आ रही है. ओके, Yes, sir. तो स्टार्ट करते हैं हम। सब्जेक्ट जो है हमारा हाइड्रोलॉजी है, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। सो स्टार्ट करते हैं। So today is our lecture number 3 of the subject hydrology. And today's topic is water budget equation for a catchment area, or also आवाज़ आप लोग को आ रही है? शीश, आवाज़ आपको आ रही है? एनीवन? इमरान खान? शीश? एहतशाम खान? जी, आवाज़ आप लोग को आ रही है?
यस सर। आप लोग जो है मेरे ख्याल से आप लोगों ने ज्वाइन किया है और आप लोग ने जो है बस मोबाइल एक जगह पे रख दिया है। सर यह सिग्नल का मसला है, इसलिए कभी आवाज आते हैं। अच्छा, तो जो है कॉल आ गई थी उस वजह से जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी जो है मैं दोबारा कंफर्म करना चाहता कि क्लियर आवाज़ आप लोग को आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो जो है स्टार्ट करते हैं। So our subject is hydrology, and it is for BC Civil Engineering Technology, and the credit hour for this course is 2 hours. Today we will have lecture number three. In lecture number three, the topic we will study today is a water budget equation for a catchment area. Uh, the area of a land draining into a stream at a given location is known as catchment area or drainage area or drainage basin or watershed. So any area which drains, yeah, into a stream at a given location, any location it may be. So it is that land area of land is known as the drainage area. It also known as the drainage basin or watershed or a catchment area. For a given catchment area in any interval of time, the continuity equation for water balance is given as a change in mass storage, that is equal to a mass inflow minus mass outflow. So in order to get the continuity equation for water balance for a given catchment area in any time interval, the water balance equation is given as the change in mass storage equal to mass inflow minus outflow minus mass outflow. If we minus the mass outflow from the mass inflow, so we will get the change in the mass storage. The change in mass storage is denoted by delta S, that is equal to mass inflow is denoted by Vi, and mass outflow is denoted by V naught. This water budget equation for a catchment area is also known as the water balance equation for given catchment area. The water budget equation for a catchment area considering all process for time interval delta t is written as delta S equal to P minus R minus G minus E minus T. So the water budget equation for any catchment area, including all the processes or considering all the processes in a given time interval delta t, can be written as delta S equal to P minus R minus G minus E minus T. Here delta S represents the change in storage, P is the precipitation, R is the surface runoff, G is the net groundwater flow outside the catchment area, E is the evaporation, and T is the transpiration. So in order to get the delta S, that is the change in storage, we have to minus the surface runoff, ground net groundwater flowing outside the catchment, evaporation and transpiration from the precipitation, and we will get the net change in storage, that is delta S. Storage of water in a catchment occurs in three different forms, and it can be written as S is equal to Sm plus Sm, SS plus Sm plus Sg, where S is the storage, Sm is the surface water storage, Sm is the soil moisture storage, and Sg is the groundwater storage. So, uh, for any catchment, this the water storage forms the water storage occurs in these three forms. Hence, change in storage may be expressed as delta S is equal to delta SS plus delta Sm plus delta Sg. So, in order to get the change in the storage, we denote this above equation as delta S equal to delta SS plus delta Sm plus delta Sg. The rainfall runoff relationship can be written as R is equal to P minus S. This equation is used for finding the relationship between rainfall runoff
In here, R is the surface runoff, P is the precipitation, and L is the losses. That is water not available to run off due to infiltration, evaporation, transpiration, or surface storage. So this is known as the water budget equation for a given catchment area, or also known as the water balance equation for a given catchment area. uh, इसके अंदर हमारे पास जो वर्ड कैचमेंट एरिया है, इसको हम जो है ड्रेनेज एरिया भी कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन भी कहते हैं, और वाटर शेड भी कहते हैं। ये हमारे पास एरिया वो एरिया ऑफ लैंड है जो कि ड्रेन करता है स्ट्रीम के अंदर, ठीक है, किसी भी गिवन लोकेशन के ऊपर। इसको जो है हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, ड्रेनेज बेसिन, और ड्रेनेज एरिया और वाटर शेड। किसी भी कैचमेंट एरिया के लिए फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है फॉर वाटर बैलेंस, उसको हम जो है लिखते हैं चेंज इन मास स्टोरेज इक्वल टू मास इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। यानी कि जितना भी आपके पास जो चेंज इन मास स्टोरेज है वो आपके पास बराबर है जितना फ्लो हो रहा है, मास इनफ्लो हो रहा है, उससे आपने जो है मास आउटफ्लो जो है माइनस कर लेना है। सो यू विल गेट द चेंज इन मास स्टोरेज। तो इसको जो है चेंज इन मास स्टोरेज को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से, मास इन फ्लो को जो है वी आई से, और मास आउटफ्लो को वी नॉट से जो है हम डिनोट करते हैं। जो वाटर बजट इक्वेशन है, कंसिडरिंग ऑल प्रोसेसेस फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जो है वाटर बजट इक्वेशन किसी भी कैचमेंट एरिया के लिए, उसको हम जो है लिखते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू पी माइनस आर माइनस जी माइनस ई माइनस टी। इसमें जो पी है ये हमारे पास जो है नेट प्रेसिपिटेशन है, ठीक है। आर जो है हमारे पास सरफेस रन ऑफ है, जी जो है हमारे पास नेट ग्राउंड वाटर फ्लोइंग आउटसाइड द कैचमेंट एरिया है, ई जो है हमारे पास इवापोरेशन है, और टी जो है हमारे पास जो है ट्रांसपायरेशन। जबकि जो डेल्टा एच है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है चेंज इन स्टोरेज को। जो स्टोरेज है वाटर की किसी भी केचमेंट के अंदर, वो तीन डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो है वो हमारे पास जो है अकर होती है, और उसको हम जो है लिखते हैं एस इज इक्वल टू एस एस प्लस एस एम प्लस एस जी। इसके अंदर एस जो है हमारे पास जो है टोटल स्टोरेज है, एस एस जो है हमारे पास सरफेस वाटर स्टोरेज है, एस एम जो है सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज है, और जी जो है हमारे पास ग्राउंड वाटर स्टोरेज है। इसके अंदर हमारे पास जो चेंज है स्टोरेज के अंदर, इसको हम जो है एक्सप्रेस करते हैं एज डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस एस प्लस डेल्टा एस एम प्लस डेल्टा एस जी से। जो रेनफॉल रन ऑफ रिलेशनशिप है उसको जो है हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू पी माइनस एल। आर एस में जो है सरफेस रन ऑफ है, पी जो है प्रेसिपिटेशन है, और एल जो है हमारे पास जो है लॉसेस है। लॉसेस हमारे पास जो है जो अकर होती है वो हमारे पास जो है वो वाटर है जो कि अवेलेबल नहीं होता रन ऑफ को ड्यू टू इल्फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, ट्रांसपायरेशन या सरफेस स्टोरेज। यानी कि वो वाटर जो हमारे पास जो है रन ऑफ के लिए अवेलेबल नहीं होता, उसको हम जो है लेते हैं एज ए लॉसेस। प्रॉब्लम जो है सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। सो वी हैव प्रॉब्लम्स नंबर वन, अ लेक हैड वाटर सरफेस एलिवेशन ऑफ 103.200 meter above the datum at the beginning of certain month. In that month, the lake reserved an average inflow of 6 cubics from surface runoff sources. In the same period, outflow from the lake have an average value of 6.5 cubics. Further, in that month, the lake received a rainfall of 145 millimeter and evaporation from lake surface was estimated as 6.10 centimeter. Write the water budget equation for lake and calculate the water surface elevation of the lake at the end of the month. The average lake surface area may be taken as 5,000 hectares. Assume that there is no contribution to or from groundwater storage. So in this problem, we will calculate the water surface elevation of the lake at the end of the month. Uh, Also, we will write the water budget equation for the lake. The given data is the water surface elevation is given, which is 103.200 meter above the datum in the beginning of a certain month. Uh, Also, the lake reserved average inflow is given, which is 6 cubic, that is 6 cubic meter per second.
from the surface runoff sources. Also, in the same period, outflow from lake have an average value of 6.5 cubics, that is 6.5 cubic meter per second. In that month, further, the lake received 145 millimeter of rainfall, and in that period, the evaporation from the lake surface was estimated to 6.10 centimeter. The average surface area to be taken for the lake is 5,000 hectares. We have to assume that there is no contribution to or from groundwater storage. So first of all, we will write the water budget equation, and it can be written as change in storage is equal to inflow minus outflow. So change in storage is denoted by delta S. Inflow is Qi into delta T plus P into A minus Q naught into delta T plus EA, means that is Qi is the average inflow during the time interval, Q naught is the average outflow during the time interval, P is the precipitation during time interval, E is the evaporation during time interval, and A is the extended considered, that is area of the lake. So these are the different terms which are explained here. So Qi, which is the average inflow during the time interval, is given, that is 6 cubics, that is 6 cubic meter per second. P, that is the average, the rainfall that is received during that month is 145 centimeter. So that is equal to 0.145 meter. 145 centimeter is equal to 0.145 meter. In fact, that is millimeter. Sorry, I told that it is 145 centimeter. It is 145 millimeter. So 145 millimeter is equal to 0.145 meter. Q naught is the average outflow during the time interval, and that is equal to 6.5 cubic meter per second, which is given. E is the evaporation from the lag, that is given, which is 6.1 millimeter, and that is equal to 0.061 meter. Delta T is 1 month, so that is 1 into 30. 1 month have 30 days, and one day is 24 hours, and then 1 hour is 60 minutes, and 60 minutes have 60 seconds. So we will get the total delta T, that is the time in second, that is 2.592 into 10 to the power 6 seconds. The total area A is equal to 5,000 hectares, that is equal to 5,000 into 10 to the power 4 square centimeter. Now substituting the values in the above equation, so we will get the total change in storage delta S, that is equal to 2.904 into 10 to the power 6 cubic meter. The positive sign, the positive value indicates that the increase in storage, that we have an increase in the storage water. In increase in storage height, delta S divided by A is equal to 2.904 into 10 to the power 6 divided by 5,000 into 10 to the power 4 is equal to 0.05808. सो दिस मच हाइट जो है हमारे पास जो है इंक्रीज हुई है, जो है स्टोरेज हाइट के अंदर जो है इतना जो है हमारे पास जो है इजाफा हुआ है. सो हमारे पास जो टोटल चेंज इन स्टोरेज था, ठीक है, उसको हमने एरिया से डिवाइड किया. सो उससे हमने जो है उससे हमारे पास जो है टोटल जितना हमारे पास जो है चेंज इन हाइट की वैल्यू है वो हमारे पास जो है आ गई है. उसके बाद जो है जो न्यू surface water elevation है वो जो है हमने फाइंड किया करना है. So in order to calculate the new surface elevation, the given surface elevation is 103.200 meter. So add 0.05808 with this value, and we will get the new water surface elevation, and that is equal to 103.258 meters above the data. So in this way, you will calculate the total
new surface elevation, and also the write the water budget equation for a given lake. इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास जो है वाटर एलिवेशन जो है गिवन है, कोई लेक है उसकी जो है वाटर सरफेस एलिवेशन गिवन है जो कि 103.2 मीटर है above the datum in the beginning of the month, कोई भी सर्टेन मंथ है। जो लेक के अंदर जो रिजर्व एवरेज इनफ्लो है वो 6 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, और जो फ्रॉम सरफेस रन ऑफ सोर्सेज से, और जो आउटफ्लो है वो हमारे पास 6.5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है। जो लेक के अंदर इस उसी मंथ के अंदर जो है जो रेनफॉल रिसीव हुए वो 145 है, और सेंट जो इवापोरेशन हुई है लेक से वो 6.10 सेंटीमीटर है। इस लैग के लिए हमने जो है वाटर बजट इक्वेशन जो है लिखना है, साथ ही साथ जो है हमने न्यू वाटर सरफेस जो एलिवेशन है वो हमने जो है फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ द मंथ। जो एवरेज लेक एरिया है वो गिवन है 5000 हेक्टर्स है। हमने जो है एज्यूम करना है कि देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू और फ्रॉम ग्राउंड वाटर स्टोरेज, यानी कि ग्राउंड वाटर जो स्टोरेज है उसके अंदर या उससे जो है कोई कंट्रीब्यूशन जो है हमारे लेक के अंदर जो है नहीं हुई है। सो वाटर बजट इक्वेशन जो है वो हमारे पास है कि चेंज इन स्टोरेज इज इक्वल टू इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। जो चेंज इन स्टोरेज है उसको हम डेल्टा एस से नोट करते हैं। इनफ्लो के अंदर हमारे पास जो है कितना जो है वाटर जो है इनफ्लो हुआ है कितने टाइम के अंदर, साथ ही साथ जो है प्रेसिपिटेशन कितनी हुई है, और एरिया हमारे पास जो है कितना है। माइनस जो है जो आउटफ्लो है, क्यू नॉट जो है हमारे पास आउटफ्लो है कितने टाइम के अंदर है, ई जो है हमारे पास इवापोरेशन है, और ए हमारे पास अगेन एरिया है। ठीक है, सो इनफ्लो जो है हमारे पास 6 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, आउटफ्लो हमारे पास 6.5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड है, प्रेसिपिटेशन हमारे पास 0.145 मीटर है, इवापोरेशन जो है 0.061 मीटर के बराबर है। टाइम जो है वो हमारे पास जो है 2.592 इंटू 10⁻6 सेकंड्स के बराबर है, और एरिया हमारे पास जो है 5000 इंटू 10⁻4 स्क्वायर मीटर के बराबर है। सारी वैल्यू जो है हमने एबव ऊपर जो वाटर बजट इक्वेशन उसके अंदर जो है पुट कर लेनी है। सो वी विल गेट द टोटल डेल्टा एस वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2.904 इंटू 10⁻6 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू हमारे पास जो है पॉजिटिव के अंदर है। सो इसके मुराद ये है, मतलब ये है कि हमारे पास जो है स्टोरेज के अंदर हमारे पास जो है इंक्रीज आया, यानी कि हमारे पास जो है जो वाटर है स्टोरेज है उसके अंदर हमारे पास जो है इंक्रीज आया है। अगर ये वैल्यू आपके पास माइनस में आती डेल्टा एस की वैल्यू, दिस मीन्स कि आपके पास जो स्टोरेज है उसके अंदर जो है आपके पास जो है डिक्रीज आया है। टोटल जो हाइट है डेल्टा एस के हिसाब से हमने जो टोटल हाइट है वो कैलकुलेट करनी है। सो वो हाइट कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एस को आप डिवाइड करें टोटल एरिया से, सो यू विल गेट द इंक्रीज इन स्टोरेज हाइट। सो वो आपके पास बराबर है 0.05808 मीटर्स के। ठीक है, सो आपने जो है क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने जो है न्यू सरफेस वाटर एलिवेशन एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो गिवन जो वाटर सरफेस एलिवेशन है अबव द डेटम लाइन उसके साथ आपने ये ऐड कर लेना है। सो यू विल गेट द न्यू वाटर सरफेस एलिवेशन एंड दैट इज इक्वल टू 103.258 मीटर्स अबव द डेटम। दी उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ द एग्जांपल इज a small catchment area of 150 hectare received a rainfall of 10.5 centimeter in 90 minutes due to a storm at the outlet of a catchment draining. The catchment was dry before the storm and experienced a runoff lasting for 10 hours with average discharge of 1.5 cubic meter per second. The stream was dry again after runoff. What is amount of water which was not available for run which available was not available to run due to combined effect of infiltration evaporation, and b what is the ratio of the runoff to precipitation. So in this example we have to calculate the amount of water which is was not available to run off due to combined effect of infiltration evaporation. Also we will have to calculate the ratio of runoff to precipitation. The given area the values are the catchment area is given which is 150 hectares. Rainfall which received is given 10.5 centimeter. The time is given 90 minutes. Also the
runoff is given which is lasting for 10 hours lasting यानी मीन्स के आपके पास जो रन ऑफ की जो टाइम है कितने टाइम तक रन ऑफ हुआ है वो गिवन है 10 आवर्स तक जो है हमारे पास रन ऑफ हुई है and the average discharge during the runoff is also given which is 1.5 cubic meter per second and the stream was dry again after the runoff event पहले भी जो था हमारे पास जो स्ट्रीम था वो ड्राई था फिर उसके बाद जो है उसके अंदर जो है रन ऑफ हुई है और उसके बाद जो है रन ऑफ खत्म होने के बाद भी जो है हमारे पास जो है जो स्ट्रीम है वो ड्राई थी आफ्टर द इवेंट ऑफ रन ऑफ so solution we will write the given data in given data we have area given which is 150 hectares precipitation is given 10.5 centimeter delta t that is time is given 90 minutes uh, uh, outflow is given that is 1.5 cubic meter per second. The water budget equation for a catchment area in a time interval delta t is given as R is equal to P minus L. Here R is surface runoff volume, P is the precipitation rainfall volume, and L is the losses due to infiltration, evaporation, and transpiration. Here P is the total precipitation that is 10.5 into 150 into 10 to the power 4 divided by 100. हमारे पास जो टोटल प्रेसिपिटेशन हुई है वो 10.5 सेंटीमीटर इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है सो 10.5 डिवाइडेड बाय 100 ये वैल्यू इसकी है ठीक है उसको आपने जो है टोटल एरिया से जो है मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि टोटल एरिया के ऊपर प्रेसिपिटेशन हुई है सो यू विल गेट द टोटल नेट प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल वॉल्यूम दैट इज 157.5 into 10 to the power 10 to the power 3 cubic meter. This much amount of rainfall is occur, and this is the total volume of the precipitation or rainfall water. The losses are is sorry the surface runoff R is equal to 1.5 into 10 into 60 into 60. Here the total runoff is 1.5 cubic meter per second. So the time here multiply this value with the time that is 10 hours multiply this with 60 minutes 1 hour have 60 minutes and also 1 minute has 60 seconds so you will get the total surface runoff in cubic meters that is 54 into 10 to the power 3 cubic meters. So in order to calculate the losses due to infiltration and evaporation, we will get L is equal to P minus R. Subtract the total precipitation of, the total surface runoff from the precipitation and we will get the total losses due to infiltration, evaporation and transpiration. So the total value of P is 157.5 into 10 to the power minus 3, 10 to the power 3 minus R that is 54 into 10 to the power 3. So we will get the total losses due to infiltration and evaporation that is 10 3500 cubic meter. So this much losses occur due to infiltration and evaporation during the process. In the second case we will find the ratio of the runoff to precipitation. So in order to find the runoff to the ratio of runoff to precipitation we have R divided by P. R is equal to 54,000 and precipitation is 157.5 into 10 to the power 3. So the total ratio of runoff to precipitation is 0.343. So this much precipitation, this much runoff is occur to precipitation. यानी कि हमारे पास जो प्रेसिपिटेशन हुई है उसके जो हिसाब से जो है इतना जो है हमारे पास इस रेशियो के हिसाब से हमारे पास जो है रन ऑफ जो है हुआ अकर हुआ है. सो इस एग्जांपल के अंदर हमने जो है वाटर जो है जो टोटल कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है ठीक है अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो जो अवेलेबल नहीं होगा रन ऑफ के लिए ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन वो हमने फाइंड करना है. साथ ही साथ जो है हमने रेशियो ऑफ रन ऑफ टू प्रेसिपिटेशन वो फाइंड करना है. गिवन वैल्यूज के अंदर जो है हमारे पास एरिया गिवन है 150 हेक्टर्स है जो कि रिसीव हुए एज ए रिजल्ट ऑफ रेनफॉल ऑफ 10.5 सेंटीमीटर.
in a time of 90 minutes. uh, जो रन ऑफ लास्ट हुआ है वो 10 आवर्स तक हुआ है, और जो एवरेज डिस्चार्ज हुआ है वो 1.5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड हुआ है। ठीक है, सो ये वैल्यूज गिवन है। सो हमारे पास ए जो है 150 हेक्टर्स है, पी जो है 10.5 सेंटीमीटर, डेल्टा टी इज 90 मिनट एंड क्यू नॉट इज 1.5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। सो water budget equation for a catchment in a time interval delta t is given as uh, आर इक्वल टू पी माइनस एल। आर जो है सरफेस रन ऑफ है, पी जो है प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल वैल्यू है, एल जो है हमारे पास जो है लॉसेस है। सो पी जो है आपने कैलकुलेट करने, पी आपने किस तरह कैलकुलेट करने, जो टोटल जो प्रेसिपिटेशन उसको आपने टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर लेना है, सो यू विल गेट द टोटल प्रेसिपिटेशन। आर किस तरह फाइंड करना है, जो कि रन ऑफ है, तो रन ऑफ का जो टाइम है वो आपको गिवन है कि 10 आवर्स तक रन ऑफ जो है लास्ट हुआ है। लास्टिंग जो है रन ऑफ की लास्टिंग जो है 10 आवर्स तक हुई है। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 1.5, सो आपने आपके पास टोटल रन ऑफ आ जाएगा। उससे आपने जो है लॉसेज जो है ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन वो फाइंड कर लेनी है, जो कि आपके पास आती है 1,03,500 क्यूबिक मीटर। हाँ, उसके बाद जो आपने रेशियो ऑफ रन ऑफ टू प्रेसिपिटेशन वो फाइंड कर लेना है। सो आर बाई पी से आपके पास जो है टोटल जो रन ऑफ टू प्रेसिपिटेशन रेशियो आपके पास आ जाएगी, जो कि बराबर है आपके पास 0.343। So here the today's lecture ends. If you have any question you can ask. जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रैक्टिस करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो अगली क्लास में बता। ठीक है, ओके, अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग का आज का लेक्चर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग मीटिंग लीव करना चाहते तो आप लोग मीटिंग लीव कर सकते ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हैं।